Hello everyone. In this video, we'll be discussing the third part of Chapter 2 World Politics, which is the end of bipolarity. So, the topic which we'll be starting with is shock therapy and its consequences. The shock therapy is an important aspect of the disintegration of USSR. So, in the previous video, we discussed that after the disintegration of USSR, the republics of USSR decided to convert from a socialist country to a capitalist country. That is, they would adopt the model of capitalism and liberal democracy, which was basically the model of the Western Bloc. तो अब ये जो ट्रांजिशन के लिए मॉडल यूज़ किया गया, दैट इज़ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, दिस मॉडल केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. तो जब हम शॉक थेरेपी की बात करते हैं, इट मीन्स द सडन एंड ड्रामेटिक चेंजेस इन द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी of a country, which means that the country transforms or turns from a state controlled economy to a free market economy. This means कि जो state है that is converting from a socialist country to a capitalist country. तो इस मॉडल को शॉक थेरेपी इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस प्रोसेस इज सडन, विच मीन्स इट इज़ एक्सट्रीमली क्विक, एंड इट इज़ ड्रामेटिक, विच मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा है बिकॉज आप एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जा रहे हो एंड दैट टू सडनली. दैट इज़ वाई दिस मॉडल इज़ नोन एज शॉक थेरेपी. वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर इज़ दैट ये जो शॉक थेरेपी थी, इसकी इंटेंसिटी एंड इसकी स्पीड वेरियड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. However, जो इसकी डायरेक्शन थी that was same throughout because all the countries they were transforming from a socialist to a capitalist model. अब हम शॉक थेरेपी के कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं. So the first thing to note here is that ये जो countries हैं, यहाँ पे there is a total shift from the socialist to the capitalist model. This means कि इन countries में जो भी socialist structures हैं they will be completely destroyed. For example, जो collective farms हैं वो पूरी तरह से destroy हो जाएंगे and new patterns will come up. For example, the establishment of the institution of private property. So one important aspect is that there is large scale privatization, which means कि जो institutions पहले government own करती थी या state own करती थी, they will go in the hands of private individuals. Then there is change in the external orientation of these countries, which means कि इन countries के जो relations होते हैं with other states वो change होते हैं. So trade liberalization is also an important aspect of it. Liberalize करने का मतलब होता है किसी भी तरह की restriction को ख़त्म करना. तो ट्रेड पर किसी भी तरह की restriction को ख़त्म किया जाता है so that trade between the countries can be easily facilitated. Another important aspect is the withdrawal of state subsidies. सब्सिडीज़ बेसिकली रिलीफ्स होते हैं जो गवर्नमेंट देती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन. गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशंस देती है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और टैक्सेस, सो दैट जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम कॉस्ट पे हो. और अगर प्रोडक्शन कम कॉस्ट पे होगी तो जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो कम होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ लॉट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड दोज प्रोडक्ट्स. तो बिकॉज जो सोशलिस्ट आइडियल होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्टर दैट पब्लिक वेलफेयर शुड बी इंश्योर्ड, तो इसीलिए जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं दे प्रोवाइड फॉर सब्सिडीज़. तो इन सभी फैक्टर्स से बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इकोनॉमी को. हाउएवर देयर आर नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज एज वेल. एंड इन द केस ऑफ यूएसएसआर हम देखेंगे कि हाउ दिस शॉक थेरेपी डिग्रेडेड द कंडीशंस ऑफ दीज पोस्ट सोवियत कंट्रीज. सो नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि शॉक थेरेपी की वजह से द इकोनॉमीज़ ऑफ दीज रिपब्लिक्स वुड बी वेल ऑफ. दैट इज़ इन इकोनॉमीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा. हाउएवर दिस वाज नॉट द केस. तो शॉक थेरेपी ब्रॉट ruins to the economies of these republics. Because there was a total shift from socialism to capitalism, the state-controlled industries, they collapsed. So 90% of these स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ दे वर पुट ऑन सेल. अब ये जो इंडस्ट्रीज़ बेची गई दे वर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा कम प्राइसेस पे बेची गई. एंड दिस सेल इज टर्म्ड एज द लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री. वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द केस ऑफ रशिया. हाउएवर ये सिचुएशन बाकी रिपब्लिक्स पे भी एप्लीकेबल थी.
Now, as a consequence of this shock therapy, the value of ruble, which is the currency of Russia, that declined. Then there was high inflation. Inflation का मतलब होता है the general rise in price level. तो goods की prices काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. Then there was no food security. अब बिकॉज जो प्रोडक्शन थी दैट वॉज अर्लियर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट बट बिकॉज ऑफ शॉक थेरेपी देयर वॉज अ टोटल ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ विच द फूड प्रोडक्शन कोलैप्स्ड. अब बिकॉज देयर वर शॉर्टेजेस ऑफ फूड तो जो कंट्री थी उसको फूड को इम्पोर्ट करना पड़ता था. Then, because of all these factors, the GDP of the country was extremely low. GDP refers to the total value or the final value of all the goods and services which are produced in a country in an accounting year. अब बिकॉज जो सोशलिस्ट सिस्टम था दैट कोलैप्स्ड एंटायरली सो देयर वाज विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज दैट इज गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडीज ऑफर करती थी वो अब वापस ले ली गई थी. Which means कि जो large segment of the population that earlier depended on these subsidies which were given by the government, they were reduced to poverty. So because of this, जो gap था between rich and the poor, it widened. So now the state system was marked by great inequalities. तो अब ये तो हमारे पास थे the economic consequences of shock therapy. Now let's discuss the political consequences of it. सो पॉलिटिकल फ्रंट पे शॉक थेरेपी का मतलब था दैट कंट्रीज वेंट फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन रिजीम टू अ डेमोक्रेटिक रिजीम. अब पॉलिटिकल फ्रंट पे जो शॉक थेरेपी के रिजल्ट्स थे दे वर नॉट पॉजिटिव. दिस इज़ बिकॉज जो प्रायोरिटी दी गई थी वो दी गई थी टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म. देन जो कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्ट की गई थी इन कंट्रीज़ की दैट वाज वेरी हैस्टिली ड्राफ्टेड. Constitution is one of the prerequisite of a democratic rule. A constitution is referred to as the law of the land. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही ठीक ढंग से ड्राफ्ट नहीं करोगे it would obviously mean that the democratic rule in the country is not strong. अब democracy can be of two types which is parliamentary and presidential. Parliamentary में the parliament is supreme, that is more importance is attached to the legislative wing than the executive wing, and presidential के case में the president or the executive wing is more strong as compared to the legislature. अब in majority of these republics there was a strong executive president which was elected. अब because जो power थी that came to be concentrated in the president, तो most of the countries में the president became authoritarian. दिस मेंट कि जो प्रेसिडेंट था वो एब्सोल्यूट पावर वील्ड करने लग गया था एंड देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ डाइसेंट और ऑपोजिशन विच वाज अलाउड. सो दिस गोज टोटली अगेंस्ट द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब नाउ वी नो दैट अ गवर्नमेंट हैज़ थ्री ऑर्गन्स विच इज़ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर के केस में वी हैव सीन दैट दीज रिपब्लिक्स ऑप्टेड फॉर अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच मीन्स द लेजिस्लेचर वॉज नॉट गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस. देन एग्जीक्यूटिव के केस में वी हैव सीन कि मेजॉरिटी ऑफ दीज रिपब्लिक्स में द प्रेसिडेंट बिकेम अथॉरिटेरियन एंड द कल्चर ऑफ जुडिशरी वॉज ऑल्सो नॉट डेवलप्ड इन दीज रिपब्लिक्स. So on the whole, we can say that shock therapy did not prove to be beneficial for these republics. So we can say that these republics suffered a lot during the 1990s, both on the political front and the economic front. It was only in the 2000s that these countries or these economies started to revive. And this revival was possible because ये जो area था specifically Central Asia, this is rich in natural resources, particularly oil, natural gas, minerals, etc. So because of export of these natural resources, these economies were able to revive in the 2000s. Now let's move on to the next topic, which is tensions and conflicts. So apart from the political and economic ruin which these countries were already undergoing, this area was also subject to a lot of conflicts and a lot of tensions. So there were a lot of civil wars. Civil war का मतलब होता है conflicts which take place between groups within the same country. For example, in the case of Tajikistan, the civil war lasted up till 2001, which is almost for a period of 10 years. Next, there were a lot of secessionist movements. Secessionist movements का मतलब होता है that you want to break away or withdraw from a group. So in this case, we have an example of Azerbaijan. तो Azerbaijan के case में there was a group of people
who wanted to break away from the province of Nagorno-Karabakh and wanted to join Armenia. अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे इसमें द अदर पावर्स ऑल्सो यूज टू इंटरवीन एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो सिचुएशन होती थी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी because these powers used to resort to bombings as a result of which there were a lot of human rights violation and a lot of destruction of life and property. Apart from internal conflicts, there were conflicts between different countries. For example, there were fights over river waters, there were fights over other natural resources as well. Particularly देखा गया है that the area of the Central Asian republics was the most disturbed area. This is because this area was rich in hydrocarbon resources, that is oil, natural gas, etc. तो इस एरिया में ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते थे एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर वाज ऑफन competition between outside powers and the oil companies of the country. Another important reason is that this region was close to Russia, China, Afghanistan and West Asia. अब इसकी क्या implications थी? अब after the 9/11 attacks on USA and the Iraq-US war, USA wanted to establish bases in Central Asia. अब ये इसलिए so that जो American planes थे they can easily fly over Central Asia and go to Afghanistan or to West Asia. So Iraq is a part of West Asia. तो अगर USA Central Asia में अपने bases बनाता तो it would have been easy for USA to fight the wars in Afghanistan and Iraq. अब अफ़गानिस्तान के साथ वॉर इसलिए थी बिकॉज जो 9/11 के अटैक्स थे दे वर बाय अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन called Al-Qaeda, which was led by Osama bin Laden. So USA wanted to dismantle Al-Qaeda, जिसका बेस अफ़गानिस्तान में था. एंड जो इराक US वॉर थी इसके बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब वी नो कि USA सेंट्रल एशिया में बेसिस क्यों इस्टेब्लिश करना चाहता था, बट ऑन द अदर साइड रशिया वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया. दिस वॉज बिकॉज रशिया को लगता था कि ये जो कंट्रीज़ हैं द कंट्रीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद रशिया, तो इन कंट्रीज़ पे रशिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए. अगेन चाइना के भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे इस एरिया में, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स दिस एरिया बिकेम अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. Now let's move on to the last topic, which is India and post-communist countries. That is, इन countries के साथ इंडिया के कैसे relations हैं. So इंडिया का relation इन countries के साथ काफ़ी ज़्यादा friendly है, but जो strongest relations हैं that are with Russia. Indo-Russia relations इतने ज़्यादा strong इसलिए हैं because even when Russia was a part of USSR, India maintained good relations with Russia. So during the Cold War, Indo-Russian relations, they were multidimensional in nature. For example, on the economic front, Russia supported India by aiding for public sector enterprises or public sector companies. Then Russia also provided capital goods to India. On the political front, Russia supported India on the Kashmir issue. And in the 1971 Bangladesh Liberation War, Russia helped India. Then military front पे Russia shared the military technology and military equipments with India when no other country was willing to do so. Then on the cultural front as well, both the countries maintained good relations. Then both India and Russia, they share a vision of multipolar world. मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म. दैट इज पावर जो है वो किसी एक कंट्री या किसी दो कंट्रीज़ के बीच में डिवाइडेड ना हो, बट देयर आर अ नंबर ऑफ प्लेयर्स. देन जो इंडो रशिया रिलेशंस हैं दे आर बेनिफिशियल टू बोथ द साइड्स, दैट इज टू इंडिया एज वेल एज टू रशिया, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर गिवन इन द बुक विच यू कैन रेफर. And finally, although the relations between India and Russia, they are the strongest, India has also maintained good relations with the other republics. India cooperates with these republics in a number of ways, for example, by investing in oil fields, etc. So this is all for this video. Thank you so much for watching.